Hello students, your CBSE class 12 physics syllabus is divided into 9 units. It contains 14 chapters. According to CBSE, it is divided into 9 units, and that 9 unit is divided into 14 chapters in the NCERT book. Your first unit, which is consist of 2 chapters, is the electrostatics, in which we will study about the charge, nature of charge, properties and phenomena associated with the charge. There are so many things linked with this charge. Second unit is current electricity. In this unit, we will study about the properties of the charge when charges are flowing in a particular direction. Means it forms an electric current. So in second unit, which is the current electricity, we will study about some properties associated with the charge when charge are moving in a particular direction. There are so many things in the second unit. In third unit, that is the magnetism and magnetic effect of current, we will study about the magnetic property of matter and magnetic effect due to flow of charge when charges forms electric current. So basically, in this we will also study about the charge which is producing electric current, as well as it produces a magnetic field. In fourth unit, we will study about the production of EMF. This unit is known as electromagnetic induction and AC. It consists of 2 chapters. One is electromagnetic induction and second one is AC. In this chapter, in this unit, we will see that the electricity and magnetism are not two different things. Both of them are the part of each other. If we have an electric field, then we must have a magnetic field too. So after this unit, we will get information about the conversion of electricity into magnetism and magnetism into electricity. And in this chapter, we will also see the formation and propagation of electromagnetic wave. And these electromagnetic waves are nothing but light and radio waves, which we are using in the mobile sets, television sets, etc. So to know the production and propagation of electromagnetic wave, means light, we are studying these 4 units. So in this first unit, we will study about the charge. Now question arises here, what is charge? All of you know that electrons are revolving around the nucleus in certain energy level, and positive protons are lying inside the nucleus. When we rub one body with the another body, then most of the cases, due to exchange of electron, an attractive force is produced in the bodies. When we put cum over our dry hairs, then cum becomes charged. It attracts small particles which is kept nearby. When we rub off a plastic sheet from a book or copy or packing material, then that plastic sheet attracts the wall. It sticks with the wall till it neutralizes itself. So, what is charge? Charge is the intrinsic or true property of a fundamental particles like electron protons. Due to exchange of these particles from one body to another body, the attractive
force produced between the two bodies, and this attractive force is known as electrostatic force, which is also known as Coulomb force. Later we will discuss about this. So basically, charge is a true or fundamental intrinsic property of some elementary और फंडामेंटल पार्टिकल्स जिसके कारण एक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दो बॉडीज के बीच प्रोड्यूस होता है. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज? चार्ज ओवर अ बॉडी is due to the exchange of electrons from one body to another body. The body which accepts the negative electron becomes negatively charged body, and which donates the electron, which donates the negativity, becomes positively charged body. Now, the production of positivity and negativity due to the exchange of electron, so the positivity and negativity is integral or integral multiple of charge of each electron. So basically, the charge over a body is in the quantized form, that is integral or integral multiple of charge of electron. तो किसी भी बॉडी के पास जो भी चार्ज है वह इलेक्ट्रॉन के चार्ज जो कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम के बराबर है के इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1, 2, 3 के गुणज के रूप में होगा. द नेट चार्ज ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो, मतलब जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉडी न्यूट्रल होगी. बट द चार्ज ऑफ अ बॉडी कैन नेवर बी जीरो. बिना चार्ज के किसी भी बॉडी का होना लगभग इम्पॉसिबल है, एक्सेप्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स. तो इसका मतलब यह हुआ कि द चार्ज ऑफ अ बॉडी कैन नेवर बी जीरो, बट द नेट चार्ज ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो. देयर आर टू टाइप ऑफ द चार्जेस. वन इज पॉजिटिव, अनदर इज नेगेटिव. The like charge particles, bodies repels each other, and unlike charge bodies attracts each other. This attraction and repulsion is due to the electrostatic force, and it is depends upon the magnitude of charge. It is inversely proportional to the square of distance between the two charges. Also, this force depends upon the medium in which the charges are placed or kept. उस मीडियम के ऊपर वे निर्भर करते हैं जिस मीडियम में ये चार्ज रखा हुआ है. तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया. दूसरी चीज ये क्वांटाइज्ड फॉर्म में है. लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं. ये एडिटिव नेचर रखता है. अगर एक बॉडी के पास 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है और दूसरी बॉडी के पास -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और दोनों को अगर हम लोग टच करा दें, देन 4 - 2 दोनों के पास अब टोटल चार्ज बचेगा 2 माइक्रोकूलम. और अमेजिंगली जब हम इन दोनों बॉडी को थोड़े टाइम के लिए टच कराने के बाद उसको रिप्लेस कर देते हैं एट द सेम डिस्टेंस, तो वह चार्ज जो कि 2 माइक्रोकूलम का दोनों के ऊपर था अब 1-1 माइक्रोकूलम का दोनों बॉडीज के ऊपर चला जाता है. पर जो भी चार्ज उसके पास है दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्ज को हम ना पैदा कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर. तो चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर है. चार्ज का प्रोडक्शन या डिस्ट्रक्शन नॉर्मल केस में पॉसिबल नहीं है. अगर हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को लें तो चार्ज और मास में सिमिलरिटीज बहुत सारी हैं, बट देयर आर सम डिफरेंसेस टू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द चार्ज एंड मास. चार्ज एंड मास बोथ आर द इंट्रिंसिक और फंडामेंटल
things. Both of them are the natural thing. दोनों के बीच लगने वाला फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम है. दोनों ही के बीच लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर मैग्नीट्यूड है. बट व्हाट आर द डिफरेंसेस? There are two types of the charges. One is positive, another is negative. But we have only one kind of mass. Masses have always attractive nature. They don't have any repulsive nature. Whereas the charges have attractive and repulsive both type of the nature. Charges are conservative in form. कंजर्वेटिव का मतलब यह है कि इसे हम पैदा कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. बट मासेस आर नॉट कंजर्वेटिव, क्योंकि मास को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. यू विल गेट ऑल द एक्सप्लेनेशन इन द पीडीएफ फॉर्म व्हेन यू विल कनेक्ट विद द गूगल मीट. सो नो नीड टू राइट दीज थिंग्स. These are the basic elementary things. So whenever you will be at the Google Meet, we will provide you all these in the PDF form. The masses are changing their magnitude due to velocity. Charges emits electromagnetic wave, then they are moving. Whenever charges are in motion, then their magnitude remain constant. But when the masses are in motion, their magnitude does not constant. So these are the differences and similarities between the charge and mass. So these are the very small things. Now to measure the quantity of charge, we will see the electroscope. That is a very important thing. It measures only the qualitative nature of the charge. It is unable to measure the quantitative value of charge. मतलब ये केवल इस बारे की इंफॉर्मेशन देता है कि चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, चार्ज ओवर अ बॉडी ज्यादा है कि कम है. यह नहीं बता पाता है कि कितना चार्ज ज्यादा या कितना चार्ज कम है. इसमें एक मेटल की रॉड के साथ दो एल्युमिनियम के फॉयल या दो गोल्ड की स्ट्रिप्स लगी रहती हैं, जिसका एक मॉडल हमने बनाया हुआ जिसको हम अभी आपको दिखा